Hello friends, welcomes to Birens Academy. I am Pramila. Today we will going to cover a new topic, that is the theatre of the absurd. So before going to start the class, what is the meaning of absurd? The meaning of absurd is that is unethical. Okay, that means meaningless. Absurd माने कौन? Absurd माने होची meaningless, माने सेथरे किछि meanings नाही. बुझी परलो? A theatre of absurd genre primarily concerned with existentialistic philosophy or existentialism philosophy. It is very much important that this theatre of absurd first concerned with existentialism or existentialism philosophy. Okay. The play have a circular format with the starting point and ending point being the same. So in this play you will find the circular format. That is, there is no starting point or there is no ending point. Understood? It is a circular format. देखो गोटे नॉर्मल गोटे थिएटर बा प्ले बा नोवेल ड्रामा जहाँ भी आम देखा से कौन हो गोटे स्टार्टिंग पॉइंट थी बा स्टार्टिंग रे गोटे स्टोरी लाइन स्टार्ट हम तार एंडिंग पॉइंट थी. अंडरस्टूड. बट एमती थिएटर ऑफ एपिसोड रे तमें किसी स्टार्टिंग बा एंडिंग पॉइंट्स किसी पाइपर नहीं. ओके. द प्ले टू रिप्रेजेंट द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस in a meaningless universe by the fantastic means. Okay, to represent the absurdity of human existence, that is the human existence is meaningless universe by the fantastic means. Okay, amoro theatre of absurd re ame kono paiba je human existence is meaningless. Understood? So here he want to say in the theatre of absurd जे आमर लाइफटा गोटे मीनिंगलेस से किसी मीनिंग्स नाही. ओके. इरेशनल एंड इलॉजिकल स्पीच फॉलोज द लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड आर्गुमेंट्स. हियर द इरेशनल एंड द इलॉजिकल स्पीच that follows a logical construction and arguments. Okay. It shows what occurs when human existence is devoid of meaning or purpose and communication breakdown. The theatre of absurd shows that how if the human being or the human is devoid of meanings, okay, devoid of any kind of purpose in life, so how his communication breakdowns and how his situations will going to be. Understood? जे जदि आम लाइफ रे देखो आम समस्त लाइफ रे किछि किछि मीनिंग्स थाउची माने आमर किछि किछि पर्पस थाउची. तुम मान पर्पोज जे पीजीटीटा क्रैक करवा इवेन बहुत जनकर आउ कि अलग अलग भी पर्पोज थी लाइफ रे बहुत आग को जा. बुझिपार एमती समस्त आइडेंटिटी वाइज बा समस्त एज ए पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट पर्पोज थाए. बट जदि से पर्पोज ही नथिबो लाइफ रे किसी पर्पोज नथिबो मीनिंग्स नथिबो तो कौन हम आमर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हम बा आमर लाइफ रे किसी एक्जिस्टेंस किसी नथिबो. अंडरस्टूड? दैट इज एब्सर्डिटी. ओके. एंड इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट नोटेड डाउन हियर, that is origin of absurd theatre. Okay, it is very much important. Most of the time these questions repeats. Okay, many times I have seen this question in many papers. So here the term absurd is coined by Martin Esslin. Okay, Martin Esslin coined the term absurdism or absurd theatre in 1960s. His essay The Theatre of the Absurd is his writing. এটা बहुत इम्पोर्टाट जे मार्टिन एस्लिन ओरिजिन करथिले एब्सर्ड थिएटर को 1960 रे तांकर राइटिंग्स बा तांकर एसे रे द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. बुझी परलो? सी बिफोर गोइंग टू टेल दीज थिंग्स आई हैव टू डिस्कस समथिंग, दैट इज हाउ द एब्सर्डिज्म और द एब्सर्डिटी क्रिएटेड, हाउ द एब्सर्ड थिएटर क्रिएटेड. ओके. नोटेड डाउन हियर वन another name, that is Albert Camus. Okay, Albert Camus in his writing, in his essay Myth of Sisyphus,
Here I will writing Albert Camus, The Myth of Sisyphus. Okay, this is the important writing. Note it down. Albert Camus, in his essay Myth of Sisyphus, first he defined and first he used this term. Okay, and in his essay he says that human situation is essentially absurd and devoid of any kind of purpose. Understood? Here Albert Camus in his essay says that human situation is essentially absurd and devoid of purpose. Okay, so he first defined the term. Okay, but when the question will come, who coined the term, you have to write Martin Asley. A theatre genre originated in the mid 20th century in Paris and New York City. The theatre genre originated in mid 20th century in Paris and New York City. And here जे समस्ते जानचो जे आमर वर्ल्ड वॉर टू एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू रे कौन होता जे आमर बम पकाइता बम ब्लास्ट होता हिरोशिमा रे ओके तापर ए मूवमेंट को एटा देखिकी ए सिचुएशंस को देखिकी ही आमर एब्सर्ड मूवमेंटा स्टार्ट होता एब्सर्डिटी ओके दैट इज एब्सर्ड थिएटर बा एब्सर्ड मूवमेंटा स्टार्ट होता अंडरस्टूड एंड द पर्पज ऑफ एब्सर्ड थिएटर नेक्स्ट they attack the comfortable certainties of religious and political orthodoxy. Here he attacks the comfortable certainty of religious or political orthodoxy. Okay, it is an attack. Aim to suck its audience out of a complicacy. He gives the audience a complicated situations. Okay, by that situations the audience will think about the movement or the situations. Understood? His main aim is that the face to face with the harsh fact of human situation. It provides the face to face fact of the human situation. ଯେତେବେଳେ वर्ल्ड वॉर टू रो एंड है जिते बम ब्लास्ट है हिरोशिमा नागासाकी रे से टाइम रे कौन है से सिचुएशंसटा गोटे हार्श सिचुएशंस थिला तो एब्सर्डिटी थिएटर बा एब्सर्ड थिएटर बा राइटिंग्स रे से माने गोटे ह्यूमन सिचुएशंस ह्यूमन कंडीशन को रिप्रेजेंट करुले अंडरस्टूड आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड दैट इज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट राइटिंग ऑफ सैमुअल बेकेट दैट वेटिंग फॉर गॉडट हियर द वेटिंग फॉर गॉडट here in this writing the Samuel Beckett writing most of the time you will get the characters names also that is Lucky and Pozo okay Lucky and Pozo. The next is The Jew Story written by Edward Albee and Ping Pong by Arthur Adamov okay Arthur Adamov. Then Homecoming by Jean Genet. The Balcony, that is also written by Jean Genet. Okay, these are the important writings of absurd theatre. And you will get another writings also, that is The Birthday Party by Harold Pinter. The Birthday Party by that is Homecoming written by Homecoming written by Harold Pinter. Okay. Homecoming is written by Harold Pinter. And The Birthday Party. This is also written by Harold Pinter. It is also a episode writing.
And normally in episode theater or in episode writing, you will find there is an anti-plot. Okay, there is a anti-plot. Anti-plot and dark humors. Okay, in episode writing, you will find the anti-plot and dark humors. I hope you understood the concept of the theater of episode. If you have any kind of doubt, you can ask me. And thank you for the class.